Hello students. So we are discussing man-made materials topic. In that we already discussed plastics, advantages, uses of plastics, and types of plastics. So today we are going to discuss about uh, thermocol, which is actually also kind of plastic only. So thermocol you might have widely seen. If you see, these boxes, plates, मतलब हर जगह आपको ये थर्मोकोल देखने को मिलेगा. खासकर समझ लो आपने फ्रिज लेके आए घर, या आप एसी लेके आए, या कुछ ऐसी वस्तु लेके आए बाहर से, उसमें हमेशा देखेंगे आप टीवी लेके आए, ये थर्मोकोल का पैकिंग में रहता है वो हमेशा. तो और आजकल प्लेट्स बहुत जगह यूज होता है. सो ए न्यू इजी ब्रेकेबल आइटम bought at your home is usually packed in a box so as to prevent that item from breaking while handling the box. It is always packed in one more wrapping. So usually wrapping is of thermocol क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कुशनिंग इफेक्ट है इसमें, और ये बहुत ही अच्छा शॉक एब्जॉर्बिंग है. इसलिए आपका जो कीमती आइटम रहेगा वो डैमेज नहीं होगा, इवन अगर कहीं वो गिर गया या किसी से टकराया. सो नाउअडेज प्लेट्स एंड गिलासेस, आजकल आपने देखा होगा जो प्लेट्स हैं, नाउअडेज द प्लेट्स used in mass feast is also made up of thermocol क्योंकि ये easy है कैरी करना, और इसको शेप देना बहुत easy होता है और सस्ता रहता है, इसलिए आजकल उसको यही यूज कर. थर्मोकोल प्लेट्स भी बहुत यूज होती हैं. और थर्मोकोल इज ए फोम ऑफ ए कम्प्लेक्स मटेरियल कॉल्ड पॉलिस्ट्रीन. अभी आप बोलेंगे सर ये पॉलिस्ट्रीन क्या है? ये पॉलिस्ट्रीन नहीं, पॉलिस्ट्रीन एक प्लास्टिक ही है. पॉलिस्ट्रीन इज अ वर्सेटाइल प्लास्टिक. क्या है वो पॉलिस्ट्रीन? Polystyrene is a versatile plastic used to make wide variety of consumer products. So polystyrene जिससे थर्मोकोल बनता है वो प्लास्टिक ही है एक. तो उसमें आप हार्ड अलग अलग लेबोरेटरी वेयर्स, मतलब पॉलिस्टीरीन, हम पॉलिस्टीरीन तो नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं थर्मोकोल, हम उस पर फोकस करेंगे. तो ये पॉलिस्टीरीन ऑल्सो इज मेड ऑफ ए फोम इंटू फोम मटीरियल. जो ये फोम मटीरियल है ना बेटा, जिस पॉलिस्टीरीन को हम फोम मटीरियल बनाते उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोकोल. और ये बनता कैसे? पॉलिस्टीरीन को एक्चुअली एक्सपैंड किया जाता है. एक्सपैंड कैसे किया जाता है? पॉलिस्टीरीन छोटे छोटे, आपने अगर साबुदाना देखा होगा ना, उससे भी छोटे, एकदम छोटे छोटे फाइबर रहता है सफेयर का, उसको हीट किया जाता है, उसको एक स्टीम दिया जाता है, हाई स्टीम दिया जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उससे ये पॉलिस्टीरीन एक्सपैंड हो जाता है, और वो एक्सपैंडेड फॉर्म को फिर उसको मोल्ड करते हैं, उससे हमको फिर ये थर्मोकोल मिलता है. तो और उसमें फोम पॉलिस्टीरीन कैन बी मोर देन 95% एयर, इसलिए वो लाइट रहता है. आपने देखा थर्मोकोल बहुत लाइट रहता है, एंड इज वाइडली यूज्ड टू मेक होम एंड अप्लायंस इंसुलेशन, लाइट वेट, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग, सर्वबोर्ड, फूड सर्विसेज, बहुत जगह यूज होता है पैकेजिंग में. ये इसको आपको और अच्छी तरह समझने के लिए मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें. ये वीडियो में पूरा प्रोसेस दिया है कैसे बनता है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस और यूजेस हैं, तो यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट thermocol. We call it packing foam, but its real name is expanded polystyrene packaging, those feather-light white foam inserts that come with many boxed items. They not only secure the merchandise within the box, they also act as a shock absorber during transport. Polystyrene plastic comes in tiny pellets about a millimeter big. The first step is to expand them inside a steam chamber. The 200°C heat causes the pentane gas in the pellets to escape, allowing air to enter the pellets and inflate them up to 40 times their original size. Here are the polystyrene pellets before and after expansion. The factory then bags the pellets in huge sacks. To make expanded polystyrene products, they start by dumping sacks of expanded pellets into what's called the block mold machine. The more pellets they put per cubic meter, the denser the product will be.
They steam fuse the pellets together, molding them into a block that's roughly 5 meters long by a meter wide by 3/4 of a meter high. This molding process takes from 5 to 20 minutes, depending on the density. A scale built into the conveyor belt weighs the block to make sure it meets specifications. Depending on its density, a block this size can weigh anywhere from 45 to 200 kilograms. Now the block is ready to be cut into whatever product the client has ordered. Expanded polystyrene is best known as a packaging material, but it also has many other uses. Here, they're slicing a block into insulation panels. Builders use expanded polystyrene insulation for basements, roofs, foundations, and inside and outside walls. Regardless of the product, they cut polystyrene blocks using a copper and nickel wire that's electrically heated. It melts the polystyrene on contact, enabling fine precision cuts almost to the millimeter. To make expanded polystyrene packaging, they custom cut the specific shapes required. These squares they're gluing together have been ordered up by a furniture manufacturer. They're designed to fit onto the bottom of chair legs to protect them from damage during shipping. This machine handles more detailed and complex jobs. Its cutting wire is guided by computer software, so it can cut virtually any design. Expanded polystyrene is a low-cost alternative for making commercial signs that can be hung indoors or out. A sign made of high-density expanded polystyrene and coated with a quality exterior paint has an outdoor lifespan of a few years. This moldable product has endless creative and commercial uses. तो होप आपको वीडियो से काफी कुछ चीजें समझ आ गई होंगी। तो लेकिन एक चीज याद रखिए बच्चों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो परफेक्ट है। हर एक चीज का कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव है नहीं, होने ही वाला है। तो इसलिए ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको पता होना चाहिए कि इसका एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, ताकि हम उससे बचे। जैसे एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ थर्मोकोल क्या क्या ऑन एनवायरमेंट। एक्सेसिव कुछ भी करते हैं तो बैड ही। जैसे थर्मोकोल का हमने इतना सा एडवांटेजेस देखा और कैसे बनता है, उसका बहुत सारा एडवांटेजेस भी देखा, लेकिन उसका क्या क्या इफेक्ट्स है वो भी हम देखते हैं। बीइंग कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट इन स्टायरीन, द पर्सन इन कंटैक्ट विथ थर्मोकोल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मे हैव पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड कैंसर लाइक ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। ये ब्लड कैंसर क्रिएट कर सकता है जो ज्यादा इसके टच में रहते हैं लोग, बिकॉज ये पॉइजनस है। ये तो है, ये तो हमारे लिए डेडली है। दूसरा है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये भी तो प्लास्टिक से ही बना ना। स्टाइरिन क्या है? पॉलीस्टाइरिन प्लास्टिक ही है। उसको आपने एक्सपैंड किया, जैसे आपने वीडियो में देखा, उसको कैसे छोटे छोटे को इतना बड़ा एक्सपैंड करते, फिर उसको वो मोल्ड करते हैं हाई प्रेशर में, फिर जाके ये शीट्स बनता है। तो ये लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इट टेक्स लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ थर्मोकोल, हेंस मेनी पीपल एप्ट टू डिस्ट्रॉय बाय बर्निंग इट। हाउएवर इट इज स्टिल हेड। इसको आप जलाएंगे भी तो ये क्या क्रिएट करेगा, आप देखेंगे काला धुआं निकलता है जब आप थर्मोकोल को जलाते हैं। ये पूरा पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो इसलिए आप जलाएंगे तो एटमॉस्फेयर को ही आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इन मास गैदरिंग प्लेट्स, कप्स यूज्ड
ऑफर द फूड वाटर टी मेड अप ऑफ थर्मोकोल. इट अफेक्ट्स द हेल्थ. कैसे? इफ द फूड केप्ट इन थर्मोकोल इज रीहीटेड, स्टायरीन में डिजॉल्व इन दैट फूड. ड्यू टू दिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. बेटा ये जो मास गैदरिंग में जो कप्स यूज होते हैं, जो फूड टी के लिए ऑफर, अगर वो गर्म आपने कप पकड़ा होगा हाथ में और उसमें ये स्टायरीन मिक्स हो सकता है, अगर उसमें हॉट लिक्विड होगा या कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी क्या, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है आपको. और इतना ही नहीं, इफेक्ट ऑन द पर्सन जो उधर काम करते फैक्ट्री में. पर्सन स्टेइंग इन कंटैक्ट विथ थर्मोकोल फॉर लॉन्ग टर्म में डेवलप प्रॉब्लम विथ आईज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम. प्रेग्नेंट वुमेन में फेस मिसकैरेजेस ऑल्सो. और लिक्विड स्टायरीन में कॉज स्किन कैंसर. तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं. तो इन शॉर्ट हमने आज क्या पढ़ा? हमने थर्मोकोल के बारे में पढ़ा कि कैसे ये थर्मोकोल कहाँ दिखता है आपको. एवरीडे हर घर में आपको थर्मोकोल दिखेगा ही. और फिर हमने देखा कि वो किससे बनता है, पॉलिस्टीरीन से बनता है. कैसे बनता है? एक्सपैंडेड. हमने वीडियो देखा फिर पूरा एक, और फिर उसका एडवर्स इफेक्ट देखे. तो आपका होमवर्क बेटा वही है, आप थर्मोकोल के बारे में लिखिए, उसके यूजेस लिखिए, और उसके और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक ए लिस्ट अबाउट यूज ऑफ थर्मोकोल इन आवर डेली लाइफ, इसको लिखिए. और फिर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ थर्मोकोल. तो ये 3 पॉइंट्स आपको आपके होमवर्क में करना है. धन्यवाद. थैंक यू. हरे कृष्ण.